नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हम मानते हैं कि मैथ्स इज बियॉन्ड अबेकस, अर्थात सिर्फ गुणा भाग करना कितनी भी जल्दी कीजिए आप, इट इज़ नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड कैलकुलेशंस। इट इज़ कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट है। गणितीय सोच विकसित करना, गणित के बारे में सोचना, करेक्ट ओपिनियन रखना और साथ ही गणित में कंफर्टेबल फील करना, ये मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। इसी लिहाज से हमने बहुत सारे कोर्सेज, सर्विसेज और प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर पेरेंट्स एंड एवरीबडी इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग मैथमेटिक्स। उसमें से एक प्रमुख हमारी सर्विस है गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, जिसके कई सारे वीडियो आ चुके हैं। ये 7th वीडियो है और प्रीवियस वीडियोस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनको आप देखिए और आप पाएंगे कि गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स क्या है। थोड़ा सा जो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स क्या है। गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स एक सर्विस है जिसमें आप स्टूडेंट को हमारे पास लेके आइए, उसका लेवल कुछ भी हो, मैथमेटिकल लेवल, उसको कितने भी डर लगता हो, कितना भी घबराता हो मैथ्स पढ़ने से, डरती हो, हाथ नहीं लगाती हो या लगातार स्कोर गिर रहे हो, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आप लेके आइए और हम हमारी यूनिक पर्सपेक्टिव से, हमारी रिसर्च से, एक्सपीरियंस से उसकी स्टडी करके एक ट्रीटमेंट कोर्स बनाएंगे, एक टीचिंग का कोर्स बना के देंगे उसको, जिससे कि उसका मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट पैदा होगा एंड वी डेफिनेटली विल improve upon the child whatever her level is as on date. So this is the concept of guaranteed improvement in maths. For more details, you can see the videos, various videos they are there. In today's topic, we are going to discuss is miscellaneous issues. अभी तक हमने देखे environmental issues, अभी तक हमने देखे intelligence issues, memory issues, teacher related issues. Today we will discuss the miscellaneous issues. Means सारे बचे कुछ issues जितने हैं उनमें हम उनको हम आज डिस्कस करेंगे कि what are some other issues जो ना टीचर के कंट्रोल में है, ना पेरेंट के कंट्रोल में है, ना किसी के कंट्रोल में है, बट येट दे अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स एडवर्सली. सो लेट अस गो फॉर इट. लैक ऑफ रिसोर्सेज, पर्सपेक्टिव और R&D. आज की डेट में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट सेंट्रल लेवल पे, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट, आई एम क्वाइट इन टच विद सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट जिसको कह सकते हैं which builds up resources for teachers. Of course, big organizations like NCERT are there, IEEE are there. So many institutes are there. IEEE Technical Training Institute in Bhopal is there, and so many good institutes are there. But on the whole, like a school teacher, ordinary school teacher wants to get something, so there is no easy availability of such resources. So that's a very major issue. कि कोई आपको कोई मैथ्स की रिपोर्ट पढ़नी हो या आपको कुछ पढ़ना हो तो इट इज़ नॉट अवेलेबल. तो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दैट इन द कोर्स ऑफ टाइम. बैकअप ट्रेनिंग सिस्टम फॉर हॉट्स एंड अदर मॉडल कंसेप्ट, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है जिसके ऊपर निपुण और जो अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इट इज़ गिविंग लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग functional literacy and early interest in intellectual literacy and numeracy. ये बहुत फंडामेंटल जो डिस्कशन चल रहे हैं उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इवॉल्व करने का भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसके लिए हमारे टीचर्स बिल्कुल तैयार नहीं है. एंड देयर इज नॉट इनफ टीचिंग मटेरियल अवेलेबल. तैयार नहीं इन द सेंस that there is not enough teaching material available, there is not enough opportunity available for teachers to train themselves, to understand themselves and forget about students and parents. There is no question of their learning. So we are trying to provide these also. There are some videos on higher order thinking skills, how you can cultivate them and things like this. We are going to work on it. But it's a reality that there is no such thing available. So इस कारण भी जो स्टूडेंट अबो एवरेज होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड दे रियली फील लेफ्ट ऑफ. लेट्स गो फॉर बीइंग डिफरेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. ये मैं बहुत इसमें फोर्स से कहना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ आज अभी जो सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, इट इज़ वेरी negatively impacted children. As we can see, students committing suicide in the competitive institutes, and so many things are happening. They are facing various disorders, psychological disorders,
permanent hatred for studies. So many things are at a very early age it is happening. So that is also very unfortunate. And there is lack of scope, less scope for being different. A child who is different, supposing everybody is, the school is very focused on academic intelligence, but child may be too good at physical intelligence. There are 9 kinds of intelligences, multiple intelligences. So we can be, the child can be good at something else, or even the understanding of maths. For example, you are teaching maths, you are wanting them to write 5. Suppose a class 5, a class very elementary beginning child, you are wanting them to write 5, and you want them to add 5. They cannot, suppose. But if you tell them jump 5 times, so she is jumping 5 times. So she understands what is 5, she understands what is jump, and she understands what is jumping 5 times. You will say jump 2 times more. She will jump 2 times more. And tell now how many times you have jumped. She will say 7. Because her kinesthetic intelligence is more. So this is the concept which we need to think on, कि आपकी जो समझने की मेथड है, आपके मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो हैं वो किस तरह की हैं, और आपके आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट है. हालांकि ये बात हम जरूर कहते हैं, मान भी सकते हैं इस चीज़ को कि क्लासरूम में लेस टाइम टू पे अटेंशन टू अदर किड्स. But definitely in this kind of like if you have the Beyond Abacus franchise, or if you have Beyond Abacus class you are running, then you can definitely, you will not have those many students, and you can definitely understand the child and explain them at her level or his level of mathematics. That what is the learning style, and you can work on that. Lack of interesting workbooks. Of course, there are colorful books. At least at our time, there were only black and white books. But now these days, you see a lot of color books. But they are again developing the convergent thinking. They are again expecting you to give one unique answer. So there are not enough workbooks which are opening up the parachute, or which are helping you to open your parachute. Once again, when there is a workbook, then it is for maths Olympiad, this Olympiad, that Olympiad. Means once again you are promoting competition. And once again you are promoting fears of mathematics. So this is what ultimately, I don't know why we are so much keen on being competitive after the competition. And let me tell you one more thing, that it's not that every time only those who are very competitive minded they win. Today the society, Indian society especially, ये बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे या उद्यमी पे जा रही है. तो उद्यमी होने के लिए आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है. Let me explain you through a diagram which I explained earlier also, that when you are talking of too much of competitive mindedness, you are doing sort of, जैसे एक लेंस है, and you are doing this kind of focus thinking. तो इससे क्या होता है, when you are doing focus thinking, यहाँ कोई एक पेपर है जो कि जल जाता है और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा कंपटीशन कर लिया है, and you are paying attention. This is the focused attention of competitive examination. Whereas what is the world wanting? आप इंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं, तो you need to have what is known as divergent thinking, creative thinking. इस टाइप का आपसे एक्सपेक्टेशन, ये आपसे एक्सपेक्ट. तो जो अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहे हैं, अगर आप रिसर्च पे जा रहे हैं, तो you need to have this kind of thinking. As against this kind of thing. This is the concept of convergent thinking or intelligence, and this is the concept of divergent thinking or creativity. So ये issues हैं which are there, and we need to address them. We need to understand them well in time. Let me clear up this and we proceed further. Lack of resources for adults and other learners, ये तो इतना बड़ा इशू है कि आप सोच ही नहीं सकते हो. सपोजिंग, अभी मैं तो खैर मैथ्स की टीचर हूँ, सपोजिंग आप में से कोई मान लो 50 ईयर के हैं, 30 ईयर के हैं, 40 ईयर के हैं, अब आपको ज्योमेट्री रिवाइज करना है. अब आपके पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं. या तो आपके बच्चे के साथ आप ट्यूशन पढ़ने जाओ, तो वहाँ पे एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा रहेगा, 50 साल के 40 साल के आदमी बैठे हुए, ये होगा. बिकॉज देयर इज नो वे, देयर इज नो, या तो यूट्यूब चैनल देख किसी को,
फिर वो हर चैनल में वो अगली लिंक पे ले जाएगा, उस चैनल से अगली लिंक पे ले जाएगा, सो इट्स अ वेब, सो यू नेवर एंड अप डूइंग एनीथिंग। सो हियर आल्सो वी प्लान टू कम अप विद अ सीरीज ऑफ कोर्सेज कि आप एकदम 15 पीस देके ज्योमेट्री का कोई कंसेप्ट सीख सकते हो, अलजेब्रा सीख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न। सो वी हैव डिवाइडेड द मैथ सिलेबस इनटू 12 skills एंड वेट फॉर इट एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट। तो इसलिए मैथमेटिक्स की जो है आपको जैसे एडिशनल कोर्सेज या एडिशनल इंटरेस्टिंग बुक्स कुछ भी नहीं मिलता है आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें इशू आता है मैथ्स लर्न एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मैथ, ये तो खैर भूल ही जाइए जब आपके पास मटेरियल ही नहीं है। तो हाउ हाउ मैथ रिलेट्स टू इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के लिए मैथ्स कैसा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ रिलेट करता है, डेटा साइंस को कहाँ रिलेट करता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को कहाँ रिलेट करता है, एक्सरे टेक्नीशियन को कहाँ रिलेट करता है, इवन ग्राफिक आर्टिस्ट को कहाँ रिलेट करता है, और फॉर दैट मैटर खेती को मैथमेटिक्स क्या रिलेट करता है। एंड दिस थिंग डोंट एग्जिस्ट और बायोटेक्नोलॉजी इज जस्ट फॉरगेट, वी थिंक बायो एंड मैथ्स आर लाइक दिस, we always think like this, which is not a fact. And let me tell you one more thing, I have taught good number of batches for courseworks for PhD in biotechnology and all the related fields in my university. तो जो बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में तो दे आर ब्रिलियंट, लेकिन वो कोर्स वर्क में उनको स्टैटिस्टिक्स पास करना पड़ता है, दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स वर्क। सो दैट इज आई फील दे आल्सो रिग्रेट दैट वी शुड हैव स्टडीड इट व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, बट that's there. So we are not having enough resources to make everybody realize the importance of mathematics. So I have tried to list out some issues which are there, which मतलब जिनमें स्टूडेंट का कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन वो फंस जाता है और ये पूरी परिस्थिति का फॉल्ट हो जाता है, लेकिन वो विक्टिम आपका बच्चा बन जाता है। तो इन सब पे भी अपने को वर्क करना है, लेकिन साथ ही में आप स्टूडेंट्स को लाइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट द स्टूडेंट एंड मेक हिम और हर मच बेटर वर्जन इन मैथ्स ऑफ द सेम स्टूडेंट। अगर आपको ये सारे अच्छे लगते हैं बातें या आपको इफ़ यू आइडेंटिफाई विद दीज इश्यूज़ तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने इनमें से कौन से इश्यूज़ पे फेस किया या आपका कोई और नया एंगल हो, हमें बहुत खुशी होगी उसको पढ़ के। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, अभी के लिए बनाते हैं, उनको देखिए और हम मिलजुल के विल मेक द मैथ्स गो बियॉन्ड अबेकस। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।